Hello students, our today's topic is creating vendor invoice for clearing down payment. For that we can go by transaction code FB60 or by path SAP S accounting, financial accounting, accounts payable, document entry and invoice. SAP में जाके invoice पास FB60. Enter your vendor, your date, click on calculate tax, press enter. देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है. We will pass the invoice 50001. Amount we will take 800. Tax fee 1. And cost center we will take the energy. Press enter, again press enter, and now click on simulate button and then post. Then click on document, display, then click on general ledger view. Now come back and go to FPL1 and enter details. Then click on open item and then click on special GL and then click on execute. So here our down payment request is showing, which is open. Now come back and go to all item and then click on noted item. Now click on execute button. देखो यहाँ पर हमारा के डॉक्यूमेंट डेट इज डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट शो हो रहा है. अब बैक जाते हैं एंड नॉर्मल आइटम पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं. सो देखो यहाँ पे हमारा इनवॉइस शो हो रहा है. तो हमने इनवॉइस क्लियरिंग के लिए जनरेट कर दिया.